Dear students, it is the fourth video about week 12 when we are talking about the internal and the external conflicts of Pakistan. And in the previous video, we talked about the militancy and justice and political feudalism. And now in this video, we are going to talk about political participation and feudalism, governance, military, geopolitics, fine, and several others. Political participation in feudalism. That the role of feudalism and political parties in Pakistan. Let's read. Democratic gains have been made in the recent years as evidenced by the democratic transition of government and high voter turnout in 2013. But challenges remain for inclusive political participations such as low literacy rate and the youth disenfranchisement, disenfranchisement, feudalism, kinship politics, and patronage features in the political landscape, which perpetuate economic and social divisions and unequal access to services. While this report expresses that although till 2013 the democratic rule was revived in Pakistan and the turnout of the voters remained better, yet still the people are needed to be educated, and whereas there are other problems with this democratic feudal system, that here feudalism, kinship politics, and patronage features are more dynamics. आसान अल्फाज में यह है कि भाई पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का जो जमहूरियत जो है वो बड़ी हद तक बहाल हुई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के कुछ बड़े नुकसानात भी हैं, और वो देखे जा सकते हैं कि अगर आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को देखें और रनिंग पॉलिटिकल पार्टी को भी देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर द यूथ डिसफ्रेंचमेंट जो है वो फ्रेंचाइजमेंट ये बहुत ज़्यादा है। जैसे कहने को तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने यूथ विंग बनाए हुए होते हैं, लेकिन उन यूथ विंग्स में कभी भी कोई गरीब, कोई लो लेवल का बंदा नहीं होता। लो लेवल के बंदे सिर्फ उस दिनों में होने चाहिए होते हैं जब इलेक्शन होते हैं, जब धरने होते हैं। यही हाल पीटीआई का भी है, ठीक है। फिर उसके अंदर जो पार्टी अहमियत होती है वो फ्यूडल लोगों को होती है, पैसे वाले लोगों को होती है, इसमें कोई शक ही नहीं। चाहे पीपल पार्टी हो, वो ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी पार्टी हो पाकिस्तान में, उसमें फ्यूडलिज्म जो है वो दैट इज़ मोर एक्सपेंडिंग। जमात इस्लामी को छोड़ के शायद वहाँ पर भी हो कुछ, पीटीआई में तो हद ही है that more feudalism is involved, and that is borrowed feudalism, that they have borrowed people from the various parties. Kinship politics, कि अपने रिश्तेदारों को ही आप पार्टी ओहदे देने हैं, अपने रिश्तेदारों को ही सरकारी और बाकी ओहदे देने हैं। So these issues basically are economic and the social divisions. ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी पैसे वालों का अलग ग्रुप है, सोशल डिविजन्स की बुनियाद पर ये सारे मामला चलते हैं। सो दिस इज रियली अ ड्रॉबैक इन पाकिस्तान दैट स्टिल पॉलिटिकल मैच्योरिटी इज रिक्वायर्ड। गवर्नेंस governance in Pakistan is really an issue. The power struggle between the local representatives, between establishment and between
the departments. This is very grave. Challenges in fully implementing policy developments, such as the devolution of the social sector by the 18th Amendment and the difficulties in the state responding to the multiple crises and disasters, are contributing to the conflict dynamics. Limited human and financial capacity in the public sector institutions, corruption, and heavy investment in defense have been at the expense of the investments in social services provisions, particularly for the poor. इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि जितनी भी गवर्नमेंट्स आती हैं, और ये दैट्स द ट्रू वन, या अगर वो किसी पार्टी बेस पे गवर्नमेंट आ रही है, जैसे नून लीग की है या पीटीआई की है या पीपीपी की है, सो the cabinet members and the parliamentarians want to gain more and more. Fine. If the government is by the army and back up by the other sources, they appoint their own people as chairmen and others, and this is another kind of exploitation. Even if the government is backed up by, anyway, the struggle between the prime ministership and the presidents and the others, president and others, that is really a conflicting, puzzling situation, and that impact the power gaining in weakening the state. तो पाकिस्तान स्टेट जो है वो अंदरूनी तौर पर that's worsening. Right in last a year before, the government was taking strange actions, और ख़ास तौर पर अगर आप ये देखिएगा, अभी भी नैब में जो केसेस लगे हुए हैं, वो केसेस जो हैं वो ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के खिलाफ जो केस लगा हुआ है, what is this? These all are the internal conflict and the governance issues. Well, we have talked much about the military role in Pakistan, that military has its own doctrine in Pakistan, and they safeguard the policies internally and externally, and they play a very decisive role. Let how far military can lend the democratic role to come in. But Pakistan mein is a kind of hybrid situation. It is semi-military, semi-civil, semi-establishment, semi-public. Fine. Geopolitics, we have talked about a lot in the first, that Pakistan's external relationship with Afghanistan, Russia, China, America, West, Gulf, clear. These are the geopolitical issues, and we have talked in the beginning a lot. Well, remaining issues are minorities issues in all, but role of education is very critical, that the curriculum designed so in the previous years was not up to the mark. Number two, the teachers to teach them, they were not well educated and trained. The textbooks printed were not interesting and good. However, the best efforts were made by the Punjab Textbook Board in the times of Nawaz Sharif and Shahbaz Sharif. The teachers were hired, a good chunk was invested to bring betterment in both vocational education and others, but still it is required. But unfortunately, in the recent times, the content, recent time सिलेबस के अंदर जो तब्दीलियाँ की जा रही हैं, और ख़ास तौर पर बिलीफ्स के मुतालिक और मदरसों के मुतालिक जो बातें की जा रही हैं, दे आर गोइंग टू अनदर chaos इन द कंट्री. फाइन. एक्चुअली मसला ये है कि जब देखिए, आप पाकिस्तान को शुरू से देखते चले कि 1980 में अमेरिका आया तो पाकिस्तान में गवर्नमेंट वाज ज़ियाउल हक.
दे नीडेड द पीपल, तो मदरसों को यूज किया इन्होंने, फाइन, उन लोगों को आगे लेके आए। लेटर ऑन जब काम गुजर जाता है देन दे गो अगेंस्ट देम कि ये लोग गलत हैं। तालिबान के दौर में देख लें, अमेरिकन वॉर जब हुई तो दे वांट टू विन अ वॉर, तो उन्होंने मदरसों पर अटैक किया। अब जब तालिबान जीत रहे हैं तो कहते हैं दे आर द गुड तालिबान, फाइन। सो दिस इज रियली अ वोलेटाइल सिचुएशन। नेक्स्ट इज पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स, दैट इन पाकिस्तान पैरेलल एजुकेशन सिस्टम्स आर working like madrasas, O levels, A levels, and the others. So they are the big divisions in Pakistan. I hope that you all have learned these points and will think about it, will read further for the details. Thank you.